हम शांति। ये 31 जनवरी 2022 की मुरली के ऊपर कुछ विचार है। कल बाबा ने हम सबको राज बताया था कि बच्चे, तुम्हारी आत्मा की समर्थी इमर्ज होती है स्मृति के आधार पर। तुम जितने शक्तिशाली स्मृति में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा की समर्थी भी इमर्ज होती जाएंगी और बाबा की शक्तियाँ अंदर भरती जाएंगी। तो इसलिए मुख्य बात है स्मृति, यही है साधना। तो आज का मुरली का गीत फिल्म से है, परंतु बाबा हम सब के इस राजयोग की साधना के साथ लगाता है कि ये लड़ाई हुई आंधी और तूफान की और दीवे की। तो ये दीवे आत्मा है, तो वो बूझ गई थी और महाज्योति शव हम सब की बुझी हुई दीवे को फिर से जागृत कर देता है, जला देता है, फिर संभालना हमको होता है। तो ये जगी हुई ज्योति को स्मृति कहा जाता है। तो उस स्मृति को, स्मृति में रहना, तो वो हुआ जगी हुई ज्योति। स्मृति भूल गई तो ये दीपक भी बुझ गया। कल बाबा ने सुनाया था ना, यह सारा खेल है विस्मृति का और स्मृति का। रंजन बहन आज सुना रही थी कि जब वो छोटी थी तो बहुत सीरियसली लेते थे। जब कोई आदमी शरीर छोड़ता था तो ये रस्म रखते हैं कि 13 दिवस दीवे जलता रहे, क्योंकि ये मान्यता रहती है कि आत्मा 13 दिवस यहाँ ही रहती है और फिर नया शरीर में धीरे धीरे जाती हैं, अथवा कोई दूसरी दुनिया में धीरे धीरे जाती हैं, तो उनको अंधकार में ना जाना पड़े, आत्मा को रोशनी मिले। तो इसलिए वो रस्म से बनाते हैं कि 13 दिवस वो दीवा जलता रहे। तो सीरियसली लेते थे। तो सब जो गर्ल्स थे वो रोटा पर होते थे। तो रंजन बहन का भी टर्न्स होता था इस 13 दिवस में। तो घृत डालते रहते थे कि बूझ ना जाए और अटेंशन से बैठना होता था। तो बाबा हम सब से प्रश्न कर रहा है, आप अपनी स्मृति को संभालने में इतना अटेंशन रखते हो, इतना ध्यान देते हो, इतना सीरियसली लेते हो? क्योंकि विस्मृति माना फिर से अंधकार में जाना। तो वो तो आधा कल्प तो किया ना। तो बाबा कहा कहता है कि इसमें ढीले नहीं बनो। ब्रह्मा बाबा और मामा ढीले नहीं थे इसमें। फिर दूसरा बाबा याद दिलवा रहा है कि तुम्हारा दुश्मन है ये 5 विकार, और वो तूफान के रूप बार बार आते रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे दीवे को बुझाने के लिए माया का ये लक्ष्य है। तो बाबा ये शिक्षा दे रहा है कि ऐसी वृत्ति रखो कि आपने 5 विकार दान में दिया। तो जैसे दान वापस नहीं लिया जा सकता, वैसे विकार भी आप वापस उपयोग नहीं कर सकते। तो मामा बाबा इसमें बहुत पक्के थे कि बस 5 विकार दान में दे दिया, यूज करना ही नहीं। तो कभी उनसे ये फीलिंग ही नहीं आया। जैसे दादी गुलजार भी ऐसी थी कि कभी विकार का कोई फीलिंग ही नहीं। तो मामा बाबा भी ऐसे थे।
तो बाबा हम सब को जानता है, भक्ति में ये एक महिमा है भगवान की अंतर्यामी। तो भक्ति में तो इसका तो भिन्न भिन्न मतलब निकालते हैं, परंतु बाबा समझाया करता है कि शिव बाबा हर आत्मा के मन चित्त में जो चल रहा है सब जानता। बाबा वैसे भी दिलाराम है, तो दिल में जो चल रहा है बाबा तो जानता है। तो बाबा समझाया करता है शिव बाबा अंतर्यामी उस समय, और साकार ब्रह्म बाबा था ना, वो बाहरयामी, कि वो बच्चों का बिहेवियर, एक्टिविटी, सेवा आदि से जानता था, इससे जजमेंट करता था। तो शनिवार हम इंग्लिश वालों के साथ जो क्लास कराते हैं उसमें रंजन बहन ने 2 फरवरी 1969 की मुरली पढ़ी थी। तो ब्रह्मा बाबा 14 दिवस पहले अव्यक्त हुआ था। तो उस 2 फरवरी की मुरली में ब्रह्मा बाबा सुना रहा है कि ये मुख्य अंतर है साकार से अव्यक्त होने में, कि अभी बाहरयामी नहीं है, बाहर की बातों के आधार पर बच्चों की अवस्था का जजमेंट नहीं करना पड़ता है। अव्यक्त अवस्था में बच्चों का चार्ट सारे दिवस सामने ही रहता। तो अब भी अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा वो भी अंतर्यामी है शिव बाबा जैसे। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हमारे अंदर की बात जानते हैं कि हम बार बार ये विकार का उपयोग करते रहते हैं। तो शिव बाबा सावधानी दे रहा है कि बच्चे यदि आप बार बार विकार का उपयोग करेंगे तो फिर वो आदत बन जाएंगी और आप कमज़ोर बन जाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे मैं कर नहीं सकता हूँ, बार बार क्रोध, बार बार काम विकार, बार बार, तो आपको लगेगा कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप छूट सकते हो। तो ये अंदर कमज़ोर मेंटालिटी हो जाएगी। तो इसलिए बाबा क्या कहता है कि आप बार बार क्रोध, बार बार काम, बार बार लोभ आदि ये सब नहीं करो, अंदर मेंटालिटी बनाओ। और फिर प्रैक्टिकल स्वरूप में भी जो भी तन मन धन है वो भी सफल करते चलो, क्योंकि शिव बाबा मल्टीप्लाई इस समय करता है तो चांस ले लेते हैं। और बाबा सुना रहा है कि ऐसी मुख्य तुम्हारा ध्यान है रहना चाहिए विक्रम विनाश करने में। और विक्रम 63 जन्म का विक्रम विनाश करना वो कोई जल्दी नहीं होगा। तो इसलिए आपको दिवस रात याद में रहना पड़ेगा, तब अंत में आपका सारा विक्रम विनाश हो जाएगा। तो इसलिए इसमें भी ढीला नहीं रहना, अपना चार्ट कम से कम 8 घंटे का बना के रखना है, नहीं तो हम पहुंचेंगे भी नहीं। विकार का प्रभाव कम करने के लिए, विक्रम विनाश करने के लिए, दीवे में घृत डालने के लिए बाबा एक मुख्य विधि बतला रहा है, और वो है अमृत वेले के योग। उसके बिना ये सब चीज़ होगा ही नहीं। तो समझो कोई मैराथन दौड़ रहा है, गिरता है, कुछ ऐसे बीच में प्रॉब्लम है, कुछ अंदर मन की हिम्मत कम हो रही है, परंतु यदि कंटिन्यू रखा और मंजिल तक पहुंच गए तो फिर मेडल तो मिलेगा। कोई याद ही नहीं करेगा कि वो तो गिर गया, ये तो वो प्रॉब्लम हो, डजंट मैटर। मंजिल तक पहुंच गए तो पहुंच गए, मैराथन कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट हुआ, बस रिजल्ट मैटर्स।
तो बाबा कह रहा है तुम सबका मुख्य तो है कि विक्रम विनाश हो जावे, तो यही है मंजिल। कल बाबा ने सुनाया था ना, बाकी सब साइड सीन्स है, परंतु वो मंजिल तक पहुंचना ही है। और फिर आज का वरदान कल का वरदान का कंटिन्यूएशन है। तो बाबा सुना रहा है कि संकल्प है बीज, और आपको बाबा की याद से सिद्धि खींचनी है। तो फिर आपके संकल्प में ये सिद्धि भर जाएंगी, और फिर वो संकल्प सफल होता जाएगा। ये ब्राह्मणों का संकल्प ड्रामा को प्रभावित कर सकते हैं, परंतु उस संकल्प में सिद्धि भरनी होती है बाबा की याद से। Om Shanti. Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 31st of January 2022. Yesterday Baba was speaking to us about the connection between awareness, smriti, and the power of the soul, samarthi. And the song played before today's Murli is like a story song from a film. The story of the lamp and the storm. And so what Baba is explaining to us is that our flame of the soul has been extinguished. The power has become merged. And now Baba, the great light, he comes and lights our candle. But the different influences of Maya, they're trying to extinguish that light. And so Baba was saying to us yesterday that the whole game is about awareness and forgetting, remembering and forgetting. If we can make our awareness natural, if we can make it constant, then we've won. That's what victory looks like. But Baba is aware that in that process it will be a battle, and that's what's depicted in that song, that the storm continued to try and extinguish the lamp, but that candle kept going. So Baba is saying keep going. Yoga, particularly at Amrit Vela, is going to be oil in the lamp. Ranjan Ben was saying this morning that when she was a girl, she can recall that when someone left their body, one of the rituals that they used to perform was to keep a candle burning for 13 days. And they used to take it very seriously. So all of the girls and women, they were on a rota. So for that full 13 days, that candle must not go out. So in the lamp, they used to use oil, and you had to keep an eye on that oil and keep adding that oil. So Baba is saying to us, how seriously do you take this? In Bhakti, they took it very seriously, because they would believe that the soul is transitioning from one birth to another birth, or from this world to another world. So they felt that that candle would guide the soul. It would mean the soul is not left in darkness. So they took it very seriously. So Baba is saying that how seriously are you taking maintaining your awareness? When you're aware of the soul, the supreme soul, the three worlds, the three aspects of time, the tree, then you're awake. But you forget that awareness, and your lamp has gone out, and you're asleep again. You're just like an ordinary person again. And so Baba is saying you've got to take this seriously, continually add the oil, make sure your flame is not extinguished. And then that will continue to unlock your power.
The great battle, the great storm is of the vices. And Baba is saying that's where your battle is. You're not battling with anyone else. You're battling with the vices. And one of the habits that we've got to be careful of is where we continually get defeated by vices. So Shiv Baba is explaining to us that you'll become weak if you continually become defeated. So he uses this phrase, give the donation of the vices. And what he means by that is have such determination that once you've renounced the vices, you won't take it back again. Because once you've given a donation, you then don't take it back. And Mama and Baba were very determined in this, that they had given away the vices, so they were not going to use them again. And this is how they became Lakshmi and Narayan. If we are peaceful and then we become angry, if we are pure and then we become lustful, and then that keeps happening, we actually develop a sanskar. We sort of like develop a mindset that, oh, this happens, yeah, it's a battle. And we actually weaken ourselves. So Baba's saying you're going to have to treat it like you're giving it away, so you can't take it back. And if you have that sort of determination, that sort of principle, it will help you to not support the vices. But vital for that is your Amrit Vela meditation, because you won't be able to conquer the vices without that. One of the praises of God in Hindu Bhakti is Antaryami, which means the one who knows what's going on inside of us. And the word Antar is this is a Sanskrit word. Antar, U-N-T-U-R with a soft T, and then Yami, Y-A-A-M-I, one who knows. So Antar means inside in Sanskrit, and Yami is one who knows that you're inside. And so Baba was saying that you've got Bab Dada in those days. Shiv Baba knew what's going on inside of the soul, and Brahma Baba would know what's going on by seeing the behavior and activity of the children. On Saturday in the BK Chit Chat we were reading the Murli of the 2nd of February 1969, and that was just 2 weeks after Brahma Baba had become an angel. And he was sharing in that the main difference between being in the body and being an angel is that he no longer relies on external information to know what's going on with the children. But by being in that angelic form, the child of all the children is automatically in front of him. So Brahma Baba has now also become like Shiv Baba. He has become Antaryami, the one who knows what's going on inside of all of us. So we have to work with them. They know anyway, but it's down to our introspection to identify our shortcomings and then to share it with them. And then they are our doctors, they are our surgeon. So Shiv Baba will then remove that for us as we stay in Baba's remembrance. And then what Baba is reminding us of is, children, make the most of your physical resources as well. So you have to give the donation of the vices, which is internal, and then externally just make the most of the opportunity, because Shiva is the point, he is the multiplier. So he's here for a little while, and make the most of using things in a worthwhile way. Shiv Baba doesn't take anything anyway, but it benefits others if we are using our body, mind and wealth to support
Baba's task. So in this way, Baba is teaching us how to create our future. And Baba is saying that the main thing is you've got to stay in Baba's remembrance so that you are removing the burden of sinful actions from the past. And that can take some time, so you have to be committed to that. It's not something that you can do just casually, but you're going to need to be committed to your yoga, because only if we can develop a stage of a minimum of 8 hours each day will we be able to achieve that. And ultimately that's our aim, isn't it? Yesterday Baba was saying to us that everything else is all the side scenes, but all that matters is your destination. So even if you've had battles, you've had ups and downs, ultimately no one will care about that if you get to your destination. So if we can remove all our past burdens, then we got there. In a marathon, if someone falls down along the way, or they're tired, or they've got doubts, they're not sure they can finish, ultimately if they cross the finish line, that's all that matters. They get the medal. No one will care how you got there, as long as you get there. So this is why the destination is the key. And again in today's blessing, it's a continuation of yesterday's one, where we have to become Siddhi Swarup. We have to draw the subtle powers from Shiv Baba, and then our thoughts will become reality. So whatever the thoughts are, they're seeds, and we have to plant them in the drama. But if we fill those thoughts with yoga power, then those thoughts will germinate, and the drama will be influenced by the thoughts of the Brahmins. Om Shanti.